So our next subtopic is procedure of STS page. Here we'll discuss one by one how we perform this STS page. First of all, sample preparation. हम sample कैसे prepare करते हैं? टिश्यूज से या और बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उससे हम उसको ट्रीट करते हैं बाय होमोजेनाइजर, बाय सोनिकेटर, बाय फिल्ट्रेशन एंड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. ज़ाहिर है पर्पज़ ये होता है कि उसको हम मिक्स कर सकें. मिक्स करके उसके बाद जो भी हमें मटेरियल हासिल होता है उसको हम फिल्टर करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि हमें जो उसमें डेब्री होता है वो सेटल डाउन हो जाए और हमें कंपैरेटिवली जो क्लियर sample जो हासिल हो सके. Then this sample is mixed with some suitable detergent like STH. STH if you want to separate proteins. Similarly, proteins then also are heated with some reducing agent like beta mercaptoethanol, which denatures the reducing disulfide linkages between the different components of proteins, and in this way those proteins are simplified. Then how the gels are prepared. In STS page we have two gels which are prepared. First one is separating gel, which is used to separate the mixture of different which is used to separate components of a mixture, and stacking gel. Separating gel is prepared in desired percentage. When we pour the desired percentage gel between the glass plates in a gel assembly. If we want to separate larger molecule, we use low percentage of gels, and if we want to separate a smaller molecule, then we use high percentage of gels. और अगर जब हम ये pour करते हैं उसके ऊपर bubbles बन जाएं तो उसको रिमूव करने के लिए या हम वैक्यूम यूज़ करते हैं या ब्यूटानॉल यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हम उसमें APS और टिमेट भी ऐड करते हैं जो कि पोलीमराइजेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं. अगर उसके बाद उसके ऊपर कोई अनपोलीमराइज्ड जो है एक्रिलामाइड रह जाए तो उसको वॉश कर दिया जाता है. स्टैकिंग जेल उसके बाद ऐड की जाती है, और स्टैकिंग जेल हम यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि एक ही परसेंटेज में यूज़ करते हैं आमतौर पे, विच इज़ 5%. और इसके अंदर जब जैसे हम स्टैकिंग जेल पोर करते हैं तो उसके अंदर कॉम भी इंसर्ट कर देते हैं. पर्पज़ ये होता है कि कॉम की वजह से वहाँ वेल्स बन जाएं और उन वेल्स के अंदर हम सैंपल लोड कर सकें. जब ये स्टैकिंग जेल पोलीमराइज हो जाती हैं तो हम कॉम को रिमूव कर लेते हैं, जिससे वहाँ वेल्स बन जाते हैं, उनके अंदर हम सैंपल लोड कर सकते हैं. मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो एक्रिलामाइड कंसंट्रेशन होती है सेपरेटिंग जेल में, that may vary from 5% to 25% depending on the molecules which we want to separate. Finally, the gel is fixed in the electrophoresis chamber. How then we perform electrophoresis? In electrophoresis, samples are first mixed with loading buffer and then are loaded in the wells. The loader the ladder is also used here, and normally the ladder is loaded in the first well. And various types of buffer systems are used which maintain the specific pH depending on the nature of the samples. Generally, the gel is run for about 1 hour or so at about 120 voltages if you talk about 12% gel. But this time varies depending on the sample and depending on the procedure which we are using. Negatively charged molecules, they migrate towards anode like we have discussed earlier on, and smaller molecules move faster than the larger one. Then how these proteins, they are visualized and they are stained after electrophoresis. When the proteins, they are separated, or molecules, they are separated, then the gel is stained with some dyes like Comezi blue or some other dyes, with the help of which protein molecules, now they are stained in the form of bands in the gel. So we can see
different proteins as distinct band in the gel. Now these different proteins, these are stained differently with different stains. And detergent like STS, they are used to separate the folded proteins, and a suitable marker is used, of course, to estimate molecular mass of the unknown protein fragments.